Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. This is the second set of questions from the Patent Agent Exam 2022. This is based on the Patent Act, which may be relevant for our exam of patent examiners. So the first question is, an application for restoration of a lapsed patent may be filed within how much time from the date on which the patent ceased to have effect? 12 months, 18 months, 6 months or 9 months. So answer for this is 18 months. So 18 महीने के अंदर फाइल किया जाना चाहिए जो पेटेंट सीज हो गया है उसके इफेक्ट के लिए. Which section of Patents Act empowers central government to revoke a patent in public interest? मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में किसी पेटेंट को हटाया जा सकता है, ऐसा पेटेंट एक्ट के किस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट कर सकती है? सो अंडर सेक्शन 66 ऑफ पेटेंट एक्ट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डू द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेटेंट ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? तो पेटेंट एक्ट मीन्स ये है द पेटेंट एक्ट. पेटेंट एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर पेटेंट ऑफिस एस्टेब्लिश किया जाता है? अंडर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 और सेक्शन 138 और सेक्शन 74. सो द आंसर इज सेक्शन 74. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस? कंपल्सरी लाइसेंस के लिए कौन सा ग्राउंड नहीं होता है? ए, द रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड. बी, द पेटेंटी इज ए कंपनी विच हैज गॉन बैंकरप्ट. और सी, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट ए रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस. और डी, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो कौन सा ग्राउंड नहीं होता कंपल्सरी लाइसेंस करने के लिए? Second option B, the patentee is a company which has gone bankrupt. This is not a reasonable ground. Next question is, a Danish citizen who is residing in India wishes to file first application at Denmark. Whether A, he has to take permission from the Patent Office India before filing in Denmark. B, he has to take permission from Danish Patent Office before filing in Denmark. C, he has to take permission from Denmark Embassy in India before filing in Denmark. D, he has to take permission from Indian Embassy in Denmark before filing in Denmark. So the correct answer is A, he has to take permission from Patent Office India before filing in Denmark because he is residing in India. Next question is, minimum age limit for a person to be mentioned as inventor in a patent application shall be. मतलब किसी पेटेंट एप्लीकेशन में एज ए इन्वेंटर मेंशन होगा कोई व्यक्ति, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? A, 18 years और 21 years और 14 years और none of the above. So the answer is none of the above. Next question is, controller has which one of the following powers of a civil court? Issue an order to arrest a person in case of infringement with the help of police. B, order of imprisonment to the defaulter. C, examine a person on oath and take evidence on oath. Or D, none of the above. The correct answer is C, examine a person on oath and take evidence on oath. Next question is, patent shall not be granted before the expiry of how many months from the date of publication of the application under section 11 capital A? And after expiry of 6 months or 8 months or 12 months or 9 months. So the correct answer is 6 months. जब तक 6 months expire नहीं हो जाते हैं, patent shall not be granted. A US citizen is a patentee in India. His patent rights are valid in. अगर यूएस सिटीजन ने इंडिया में पेटेंट फाइल किया है तो उसके पेटेंट राइट्स जो हैं कहाँ कहाँ वैलिड होंगे? इंडिया में, यूएसए में, या इंडिया और यूएस दोनों में, या ऑल ऑफ द अबव? तो पेटेंट जहाँ पे फाइल किया जाता है केवल उसी कंट्री में पेटेंट राइट्स वैलिड होते हैं. अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट राइट्स के लिए हर कंट्री में अलग अलग पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an applicant may file a request for expedited examination on the following grounds.
that India has been indicated as the competent international searching authority. B, that the applicant is a startup. C, that the applicant is a small entity. D, that the applicant is a department of the government. तो कौन कौन से केसेस में तेजी से एग्जामिनेशन के लिए फाइल किया जा सकता है? सो दिस क्वेश्चन इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप आंसर. Question for this, all the 4 options are correct. This is also the more than one options are correct. Who are the persons entitled to apply for patents? Any person claiming to be true and first inventor of the invention. Any person being the assignee of the person claiming to be the true and first inventor in respect of the right to make such application. C, any legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make such an application. या D, importer of the invention. So for this, A, B and C are the correct options. Next question. The patent application can be treated as withdrawn under which of the following circumstances? A, in the case the applicant or any other interested person does not make a request for examination of the application for patent within the prescribed period as specified. या B, under the condition that the applicant may at any time after filing the application but before the grant of patent withdraw the application by making a request in prescribed manner. या C, response to first examination for the patent application is not filed within prescribed time. या D, pre-grant apposition has been filed for the patent application. For this, option A and B are correct. So this was the 2022 question paper of patent agent exam. If time permits, I will come up with the other previous year's papers of the patent agent. Thank you so much.